to yet another episode of Rendezvous with Anza Saqib on CxO Global TV. CxO Global Forum is a knowledge sharing platform for all C levels across the globe. We take massive pride in contributing to the knowledge economy with our League of Extraordinary Thought Leaders. Now, these ladies and gentlemen are not only domain experts, but those key individuals who've made a considerable amount of difference and are the policymakers for the fields that they're working in. Today as well, we've got an extraordinary gentleman joining us. But before I introduce him, let me also tell you all about, how to just stay tuned, how to stay focused, and also, whenever you want to watch us live, we would appreciate if you could share some comments with us. We really like the feedback. So today's guest is Mr. Hasan Bukhari. He's the Global Chief Operating Officer at Maison Consulting. Welcome to the show, sir. Thank you very much, Anza, and thanks for having me on the show. And I'm very excited to share my thoughts and experience on this platform. We're equally as excited. Right. Mr. Hasan Bukhari, let's start with the beginning of your professional journey. So, where did you start and how did you end up here as becoming a global chief operating officer? Yeah, actually, I was born and bred in Karachi, and after graduating in back in 2004, I joined Maison Consulting and Solution, and basically, Anza, that proved as a main catalyst in transforming my professional life and personal life. So I started off my career as a simple software developer, like in any consultancy firm or in any software house. But over the period of time of 17 years, now I am heading the global operations of Maison Consulting and Solution, and that was only possible because the mission behind Maison Consulting and Solution was to create more and more natural resources and leaders who can basically contribute towards the IT ecosystem of Pakistan and also the ecosystem of international IT sector. So, and one of the reasons that in my journey of reaching to this position was the employee empowerment culture of Maison, where we ensure that whoever is performing well in the company can do a lot of good business in the company in a longer run. So we focus on a long-term employment with the employee empowerment culture rather than any short-term period of time. And I was very that over the period of 17 or years of experience, I was working with a team who was very customer obsessed and who were also customer focused. So, and also one of our belief as a company and as an individual is that we don't think so that we have any competitor in the market. We are our own biggest competition. So, and another thing that that I think is the one of the reason in my journey is that we never thought, and I personally never thought of giving up. We had a lot of problems. And Alhamdulillah, we never give up because never giving up is not in our books. And we always, as a company and individual, dream high. So whenever you dream high, you face a lot of problems, and you never had to give up because you lose only when you give up. And in last but my journey, Mr. Sultan Hamdani, who is the founder of Maison. He was really inspirational and phenomenal in motivating me along with the empowerment. Amazing, sir. What a journey, mashallah. So, for the knowledge of our greater audience, जो कि आज हमें देख रही हैं, I'm going to ask you this, sir, बड़े simple terms में. What exactly does Maison Consulting do? And आपका वहाँ जो role है, what does it involve in a day-to-day basis? Yeah, basically, it's a very good question, and I am proud to say that we are leading the pathway of Microsoft specialized technology stack
that includes Azure, that includes modern workplace, that includes ERP solution, that includes CRM solution, that includes the entire digital transformation. Yeah. So when I joined this company, it was merely 10 to 11 people company, and Alhamdulillah, down the road, we are currently having 150 plus employee base globally, with 48 plus vertical industries, and our total customer base is 350 plus customers. And we are the only company in Pakistan that has such large scale of microdynamics customers globally and locally. And we have transformed, we have done the digital transformation for I think 150 plus customers in Pakistan and 100 plus customers in Saudi Arabia and other in rest of the world. And our focus from day one is very specialized, Anza, because our business DNA is very specialized. So you can say that we are the Shaukat Khanam Hospital of Microsoft Dynamics in Pakistan. So we are not in general hospital. So our all consultants, 150 plus, they are specialized in Microsoft Dynamics technology stack, which I talk about. And when I talk about daily to daily operations, so basically our model is that we do provide the empowerment and enablement to the to our employee. So under my we have a project governance team who basically controls daily to daily operations, and normally now I am working towards the growth of the company and towards the export of the company. So our daily to daily operations like HR operations, project execution, they are normally managed by the people who we have enabled them. So if any strategic or there is a bottleneck, so then my role comes in. And one of the thing and that I would like to mention over it is that you know, our Anza, our main focus is that we want to convert the host population of Pakistan into a talented population. You know, we have a country of 220 million people. So unfortunately, I think we are not up to the mark with respect to the tech structure, tech sector. So I think we have a huge white space available. Like we have 65% of the youth available in Pakistan who are below the age of So we, as a company and as a country, I think we have a great opportunity ahead who can scale up our export and human development for our country. Absolutely. What a brilliant thought. अच्छा सर, अगर मैं आपसे पूछूं कि you know, obviously you've had the exposure of dealing with you know, multiple different businesses, and you are working in a very specialized field. So बड़ा अगर you know, in a very short and concise manner, what are the 3 key things that businesses need to keep in mind when considering digital transformation? They can say it's a $1 billion question, honestly, and this is a thing. I hope I get the $1 billion for it. Yes, inshallah, the people like you may have $1 billion thoughts and $1 billion in Pakistan as well. देखिए इसमें ना लोग customers basically confuse करते हैं digital transformation को और software implementation को. हम लोगों को कहते हैं कि basically when we talk about digital transformation, so basically first you are as a customer, your digital transformation plan should be aligned with the company vision and company strategy. आपने as a customer like से कोई paint manufacturer है, कोई chemical manufacturer है, कोई retail हाँ, उसको जरूरी नहीं है कि वो Azure ले या वो कोई ERP. Exactly. तो उनको ये पता होना चाहिए कि हमारा अगले 10 या 15 साल के अंदर क्या हमारा कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव है. उस कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एज ए मेजॉन कंसल्टिंग का सॉल्यूशन हम उनको प्रोवाइड करते हैं. तो पहली चीज ये है कि आपका डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन प्लान should be tagged with your corporate objectives as a customer, and then you should invest on a technology that is in platform like Microsoft. When we talk about मैंने आपको जिस तरीके से बताया, we are very specialized company, and why we have opted Microsoft, because Microsoft gives you the end-to-end digital transformation plan. Absolutely. ERP, CRM, emails चाहिए आपको, कोई भी चीज चाहिए वो आपको अंडर वन अम्ब्रेला जो है ना आपको मिल जाता है. सो यू शुड हैव अ स्केल अप टेक्नोलॉजी जो कि स्केलेबल और आपके पास एजाइल हो फॉर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. एंड देन सेकंड लास्ट थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज सिलेक्टिंग द राइट पार्टनर. ये जो आपका टेक्नोलॉजी पार्टनर है वो जो है दैट शुड बी अलाइंड
और वो आपके साथ लॉन्ग टर्म चले. Like Maison Consulting and Solution, we have customer who are working with us since last 15 or 16 years. Wow. So उनको जो है वो selecting the right partner is very critical. इसमें normally customers जो है ना वो थोड़ा mismatch कर जाते हैं. And in the last but not least, as a customer, you should have a team enablement. As an IT department, as a CEO of the company. So these are four ingredients that are necessary for a successful digital transformation. And as a company, we provide the managed services as well. जहाँ पे वो कंपनी जो कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का जिनको उनको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, क्योंकि आंसर इज एन बज़वर्ड नाउअडेज. सो वी डू प्रोवाइड द मैनेज सर्विसेज जो कि उनकी टीम एनेबलमेंट भी काम कर रही होती है, उनके 10-15 साल का रोड मैप भी बना रहे होते हैं, और उनको जो है राइट स्किल सेट भी हम जो है ना हंट करके देते हैं, और उनके लिए टेक्नोलॉजी भी सिलेक्ट करते हैं. Amazing, very pertinent points made, sir. आपने पहले जिक्र किया था पाकिस्तान की यूथ का, एंड हाउ मेजॉरिटी अगर हम कहीं भी देखें किसी भी वर्क प्लेस में, तो वी सी के मेजॉरिटी ऑफ द वर्क फोर्स इज ऑल्सो कंप्राइजिंग ऑफ द यूथ. तो वहां अक्सर कहीं ना कहीं कुछ प्रोफेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स भी अराइज होते हैं, एंड देयर इज ऑफन दिस अंडरलाइंग थीम के इज टैलेंट more important or is experience more important in the workplace? Being a leader, what do you think? Yeah, being a leader, and as in company, we have a concept from day one. Like मैंने आपको अपने example दिया, I was hired as a fresh graduate when Sultan Hamdani साहब interviewed me. So वो भी अक्सर एक बात करते होते हैं, और मैं भी आगे अपनी टीम पे बात करता हूँ कि talents are in the masses while degree are for the privileges. So we have a strong belief as a company, as an individual, that talent is far more important than the experience. क्योंकि अंजा देखें, आज का टेक्नोलॉजी का जो एरा है ना, उसमें टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से इवॉल्व हो रही है. आज मेरे इसका एक्सपीरियंस है, कल का वो एक्सपीरियंस उतना बेनिफिट नहीं आएगा क्योंकि टेक्नोलॉजी नहीं आ जाती है. सो टैलेंट इज फार मोर इम्पोर्टेंट, एंड एज एन कंपनी we don't look after the of hiring the experts, rather than we hire people who are attitude towards the learning, और जिनका लर्निंग कर्व जो है ना वो बहुत अच्छा होता है. सो आई थिंक वी हैव अ फर्म बिलीव that talent surpasses the experience. Zabardast. A very different opinion to have, but nonetheless well respected. Sir, if I ask you about your role as a global chief operating officer, one of the most important qualities is leadership. Lekin in the corporate sector, everyone defines leadership differently. How would you define leadership to you in one sentence? In one sentence, Anza, honestly, the leadership is all about the human to human, H to H, and also it's towards the ability to learn for unlearning. So as a leader, you have to unlearn so many things for learning the new things, and having the human to human element in your personality. And you need to also enable your team so that they can have the right decision at the right time. And also you need to create more and more leaders. We are like a company, like I gave you the example that 18 years back we were 10 to 11 employee, but now we are 150 plus, and inshallah we are growing day by day. So the main reason is that we create more leaders. And also one last thing that is very important in the leadership is that you need to lead from the front when when the chips are down, and when like COVID. So as a leader you need to lead from the front. Like किसी कस्टमर के साथ भी आपकी कोई खराब मीटिंग हो सकती है, तो आप किसी सबऑर्डिनेट को ब्लेम डालने के बजाय आप उसको खुद जो ना वो लीड कर सकते हैं. So as a leader, I think leading from the front, and also human to human element, and also the learning, unlearning and learning for new things, and employee enablement. योर टीम एनेबलमेंट इज, देखिए एज ए लीडर जितना आप अपनी टीम को एनेबल करेंगे ना, आपके ऊपर बर्डन कम आ रहा होता है. सो यू नीड टू डेवलप डिफरेंट लीडरशिप लेयर्स इन योर कंपनी सो दैट यू कैन ग्रो एक्सपोनेंशियली. Right, absolutely. Acha, sir, what would your advice be for the mid-career professionals of today? Any specific skills or certification that you would advise them to take ताकि वो future ready रहे? For mid-career professionals, one advice would be that if they are into the tech sector, so they should adopt a technology that is very scalable.
एंड आल्सो एज एन प्रोफेशन, चाहे वो अकाउंटेंट हो, चाहे वो सेल्स के लोग हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग के लोग हो, एज एन मिड कैरियर प्रोफेशनल शुड बी अलाइंड विद योर कंपनी विजन. सिर्फ हमारा बिलीव क्या है कि यूर टॉप मैनेजमेंट शुडंट ओनली बी अलाइंड विद द कंपनी विजन, यूर मिड टियर एंड यूर इवन लोअर टियर शुड आल्सो बी aligned with the company's vision, so that every individual who is the employee should see the career growth. और वो सिर्फ अपनी लॉन्ग रन, सिर्फ शॉर्ट टर्म ना देखे कि शॉर्ट टर्म में मुझे कोई फाइनेंशियल ग्रोथ मिल रही है तो मैं कंपनी स्विच कर लेता हूँ. सो यू शुड हैव अलाइंड विजन with the company, so that you can work and in that place in a longer run, not in a shorter run. और अंजर जो बेसिकली मैंने फील किया मिड कैरियर प्रोफेशनल्स में एक चीज होती है, क्योंकि उनमें थोड़ी जज्बातियत ज्यादा होती है. सो दे नीड टू हैव द मेंटरशिप फ्रॉम द टॉप एग्जीक्यूटिव्स कि जी आप थोड़ा अग्रेशन कम करें, और ये लीडरशिप की क्वालिटी होती है. एंड वन थिंग जो हम अपने मिड कैरियर प्रोफेशनल्स को एज एन मेजॉन बिलीव करते हैं कि जी यू शुड वर्क विद द ऑनेस्टी एंड यू शुड वर्क विद द ट्रांसपेरेंसी. देखिए अगर आपसे कोई गलती हो भी गई है ना, तो अपने मैनेजर के सामने या अपनी कंपनी के सामने मानने में कोई कबाहत नहीं होती. आप समझ नहीं पा तो यू शुड बी वेरी ओपन, बिकॉज इफ वी सी द यूरोपियन कल्चर और द यूएस मॉडल भी देख लें तो वहां पे ट्रांसपेरेंसी और ऑनेस्टी ही ज्यादा जो है ना किया जाता है. हमारे पाकिस्तान में थोड़ा ट्रेंड होता है कि यार ये बात को थोड़ा घुमा दो. तो हम ये मेरी एडवाइस है कि यू शुड बी अलाइंड विद द कंपनी और आप रखें ट्रांसपेरेंसी रखें. Zabardast golden words. Let's talk a little bit about your personal being. सर ऐसा कोई फैक्ट बताएं अपने बारे में जो शायद हमें आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल देखकर ना पता चले. देखें लिंक्डइन प्रोफाइल मैंने ऑनेस्टली आई एम नॉट अपडेटेड. देयर आर सो मेनी फैक्ट्स एंड ऑनेस्टली बिकॉज माय लिंक्डइन प्रोफाइल इज नॉट अपडेटेड. इवन जब CxO ग्लोबल ने भी मुझसे रब्ता किया था तो उन्होंने मुझे कहा कि आप लिंक्डइन प्रोफाइल शेयर करें. मैंने कहा मेरी लिंक्डइन, क्योंकि आई नेवर थॉट ऑफ यूजिंग लिंक्डइन एज एन कैरियर पर्सपेक्टिव. तो उसमें देखें देयर आर सो मेनी थिंग्स. आई थिंक लाइक जो मेरी पोजीशन है इस टाइम कंपनी में ऑपरेशनल हेड की एज एन CEO ऑफ द कंपनी इज नॉट अपडेटेड ऑन योर in my LinkedIn. So also family related, I think my जो जिस भी पोजीशन के ऊपर आज हूँ मैं हूँ या जो भी हम लीडरशिप का काम करते हैं, आई थिंक क्रेडिट गोज टू माय पीयर्स, ऑल कंपनी एम्प्लॉयज who has worked with us since last 17 or 18 years, then my parents and then my family members. सर कोई ऐसा फैक्ट, कोई ऐसी हॉबी कि आप इतने काम के बाद आप जिस तरह अनवाइंड करते हो, कोई पर्टिकुलर कोई स्पोर्ट हो, कोई ऐसी हॉबी हो, कोई रीडिंग हो, कौन सी ऐसी चीज है जो आप करते हैं? देखें इट्स अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन, बिकॉज आई थिंक वर्क लाइफ बैलेंस लाइफ के अंदर मैनेज करना ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. एंड एज एन इंडिविजुअल आई पर्सनली बिलीव कि अगर आपकी कोई पर्सनल लाइफ खराब है तो आप प्रोफेशनली भी इतना अच्छा एग्जीक्यूट नहीं कर रहे. सो वर्क लाइफ बैलेंस करने के लिए नॉर्मली अनवाइंडिंग में करता हूँ. अनवाइंडिंग विद आवर विद माय प्रीवियस पीयर्स जो आज किसी और फाइल पर सेक्टर के अंदर काम कर रहे हैं, किसी और कस्टमर के साथ काम कर रहे हैं. एंड देन जो मेरा फोकस ये होता है कि 7 बजे के बाद या 8 बजे के बाद जब भी मैं ऑफिस से फारिग होता हूँ, सो आई नॉर्मली स्पेंड टाइम विद माय फैमिली, माय पेरेंट्स, माय वाइफ एंड माय किड्स. और वीकेंड के ऊपर जो है वो मैं वर्क लाइफ बैलेंस करने के लिए कोशिश होती है कि काम ना करूँ. तो और क्रिकेट खेलूं, क्योंकि आजकल हमारे जो न्यू जनरेशन है उसमें टीवी देखने का और टैबलेट्स का बहुत अच्छा रुझान है. लेकिन आई पर्सनली थिंक कि जिस तरीके से बचपन के अंदर हमने अपनी क्रिकेट खेलते थे, तो आई डू प्ले क्रिकेट विद माय पीयर्स. हमने हर हफ्ते कोशिश ये करते हैं कि ऑफिशियल एक मैच करें मेजॉन के अंदर. तो जिस डेवलपमेंट है, बिजनेस एनालिस्ट, उन पे एक अच्छा हेल्थी कंपटीशन होता है, तो वो भी मैं खेलता हूँ. एंड क्रिकेट खुद खेलता हूँ एज एन ऑलराउंडर. और बस इसी तरीके और अनवाइंडिंग से देखिए कई चीजें आपकी खुलती हैं, क्योंकि कई ऐसी चीजें होती हैं जो अगर आप अपने इमीडिएट बॉस के साथ डिस्कस नहीं कर सकते हैं, जो कि आप किसी कस्टमर के साथ डिस्कशन नहीं कर सकते, पीयर्स के साथ नहीं कर सकते हैं. हो सकता है आपके पेरेंट्स आपको कोई अच्छा मशवरा दें. जो पेरेंट्स के साथ मेरी पॉलिटिक्स के ऊपर भी बात होती है. आज की टीवी में आपको पता है पाकिस्तान के अंदर कहीं पे धरना चल रहा है, कहीं पे कोई चीज चल रहा है, तो पेरेंट्स के साथ एक अच्छी अनवाइंडिंग हो जाती है, जिसमें कई दफा मैं उनसे सोल्यूशन भी मैं उनको कोई प्रॉब्लम बताता हूँ तो मुझे अपने वाले साहब से कुछ ना कुछ सोल्यूशन. एब्सोल्युटली. अच्छा सर, तो इसी हवाले से मैं आपसे पूछूंगी कि सर क्या लग रहा है, फाइनल पाकिस्तान एंड इंडिया या पाकिस्तान एंड इंग्लैंड?
नहीं, आई थिंक मेरे ख्याल से मैं आपको इंटरव्यू दूं ना, आई थिंक इंग्लैंड हैज वन द मैच, आई थिंक। Oh yes, हाँ, we were both busy and तो उसके ऊपर फिर क्या prediction है? आजकल मैं हर किसी से पूछ रही हूँ कि do you देखिए, think आपका बहुत बहुत अच्छे सवाल है। आई एम अ ग्रेट फैन ऑफ क्रिकेट, और ऑनेस्टली क्योंकि हमने बचपन के अंदर 92 का वर्ल्ड कप भी देखा था, तो उसके अंदर अंदर से मोर और लेस जो है ना, वो सेम प्रोसीजर था कि सेमीफाइनल में पाकिस्तान ने जो है ना वो न्यूजीलैंड को बीट किया था, और फिर कोई बारिश की वजह से या किसी और टीम के हारने की वजह से पाकिस्तान सेमीफाइनल में चला गया था। तो अभी भी सेम सिनेरियो है। सो आई थिंक आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट पाकिस्तान। लेकिन आज इंग्लैंड ने जिस तरीके से इंडिया को हराया, जो मैं अभी आपसे इंटरव्यू कर रहा हूँ, लेकिन ऑफिस में शायद से आवाजें आ रही हूँ, तो और एज एन कॉम हम खुश हुए हैं कि जी इंडिया हारा है। तो मैं अपनी टीम से सुबह यही कह रहा था कि आई थिंक वी शुड बी ओपन, कि चाहे इंडिया हो या चाहे इंग्लैंड हो, बट एवरी टीम हु प्लेज गुड क्रिकेट शुड विन द फाइनल। और बाय हार्ट एंड ब्रेन आई विश कि जी पाकिस्तान को जो है ना वो वर्ल्ड कप जीतना चाहिए। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह अब हम भी ऐसा टाइम देखेंगे पाकिस्तान जीते। नहीं, इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप लोग देखेंगे, यू आर न्यू जनरेशन, और बिल्कुल जो है ना वो होगा इंशाल्लाह। 92 के वर्ल्ड कप की अंजा जो है ना वो याद ताजा होगी दोबारा। All right. Thank you so much, sir. It's been an honor and a privilege. You have really taught us a lot today. Please keep contributing to the knowledge economy. And before you go, I would like to ask you, but just in the interest of time, thoda sa, keep the answer short, please. What do you think is the utility of forums like CxO Global? देखिए, आई थिंक CxO Global is doing a great work, and the platform like CxO Global Forum is that it basically helps our tech sector. It helps a lot in providing the convergence of our local ecosystem along with the with international ecosystem. So I think it can bridge the gap, and we can bring on so many technologies from outside world to Pakistan. And the one thing that I am interested in CxO Global is the advocacy in front of the publics, for the government sector, so that we can have the compliance and easy policies of ease of doing business in Pakistan, for all business, but specifically for the tech sector. Thank you so much, sir. And please keep talking to us and keep contributing in your own way. Thank you, Anza. And it was great questions. And honestly, I was really excited. And inshallah, we will have these sessions again and again. Inshallah. Right. Ladies and gentlemen, thank you so much for watching today. Please stay tuned next time. And we look forward to your feedback and many more interesting guests. Thank you.